जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं उजैर साहब। थैंक यू वेरी मच नूरुद्दीन साहब। सो वी हैव टू पार्टिसिपेंट, फारूक परवेज एंड वजीहा उल मुंतहा। सो क्या हाल है फारूक आपके? आई नो यू पर्सनली। क्या हाल है वजीहा आपके? पार्टिसिपेंट्स म्यूट ओनली मोड में होंगे तो आप यू कैन कैरी ऑन उजैर सर। सो ओके ओके चलें। सो सो अहमद गफ्फार साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सो हम सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। वेल माय नेम इज हुजैर, आई एम द HR and learning consultant, and as far as my experience is concerned, so I have a total of 10 years of experience in different multinational and local companies in Pakistan. So I've worked for National Foods, I've worked for Lucky Cement, I've worked for Aga Khan University and Hospital, and my last assignment was with Davago as head of HR. So I'm currently working as an HR and learning consultant with different companies. So आज का जो session है, this is more about HR analytics, and in this session I will be covering different topics and different insights about HR analytics, like what HR analytics is and how can we use HR data to make effective decisions in our business cycle. सो अगर मैं फॉर्मली बात करूं HR एनालिटिक्स की, सो HR एनालिटिक्स, let me move my screen. So there are so basically before I move on, I would like to share that जो सेशन है उसको बेसिकली मैंने डिवाइड किया इन टू डिफरेंट सेगमेंट्स. So the first segment is more about the theory part, and the next segment will be more about the calculation part, where we will be using different Excel functions, different Excel tools, and obviously उस डेटा को यूज करते हुए हम किस तरीके से different decisions ले सकते हैं. So first half is more about theory part, like what HR analytics is, what are HR matrices, and obviously HR dashboard क्या होता है, onboarding process किसको बोलते हैं, and then moving further, so what could be the aim of HR analytics? क्या objectives हो सकते हैं HR analytics के? Initially this term was not very popular, but nowadays now people are more inclined towards HR analytics. People are more inclined toward HR matrices. People are more inclined toward KPIs, key performance indicator, and obviously different data पे आजकल लोग बात कर रहे हैं. So जो first part है उसमें obviously theory का part है, and so same like what are HR matrices? HR matrices क्या होते हैं? So if I specifically talk about, and we will specifically talk about HR and different HR matrices, like in recruitment, in compensation, in training and development, in HR operations. So there are different HR matrices by which we can gauge and we can track the performance of HR department, by which we can gauge the performance of people management, people productivity. So there are different things that we will talk about in today's session, and obviously then in the next part, after covering the theories, then in the next part we will be working on the calculation part, like what could be the other HR matrices. Like in recruitment, there is a very common HR matrix that we talk about, that is time to fill. So time to fill is one of the HR matrices that we use in recruitment function. So इसका basically जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब आपके पास एक पोजीशन वेकेंट होती है, उस पोजीशन की वैकेंसी के वेकेंट होने के बाद से लेकर आपने उस पोजीशन को फिल कब तक किया है, लाइक आपने कब तक उस कैंडिडेट को ऑफर साइन करवा दिए. So the difference between the days of a vacant position till the potential candidate signs the offer is calculated and is known as time to fill. इसी तरीके से different और HR matrices हैं that we talked about. So सबसे पहले first of all we need to clear out like what is HR matrices, what is HR analytics, what is HR dashboard, what is hypothesis, right? So इसको understand करना बहुत जरूरी है. Then we can move forward to the processes part, obviously to the types of analytics, and then उसके बाद हम calculation पे जाएंगे. तो सबसे पहले HR matrices. So HR matrices are different tools and different KPIs that we set for HR department. अगर मैं specifically इसको बताऊं,
और अगर मैं आपको डायरेक्टली डिफरेंट कैलकुलेशंस पे ले जाऊं, सो HR मैट्रिसेस की अगर हम बात करते हैं, सो yeah, so you can see, so there are different HR matrices that we talk about on a daily basis in HR department. So let's say here are different HR matrices. So you can say revenue per employee, revenue per FTE. So FTE means full-time employee. So what could be the revenue per full-time employee, profit per employee, overtime per employee, labor cost per employee, overtime expense per period, absence rate, voluntary turnover rate, and involuntary turnover rate. So there are two different terminology that we use, that is voluntary and involuntary. So थोड़ा सा मैं इसको define कर दूं. Voluntary turnover basically means when employee resign on his own, right? And involuntary attrition basically means when we ask employee to leave the position. So ये दो important terminology जो use हो रही होती हैं when we talk about attrition, when we talk about the turnover. So दो तरह की turnovers होते हैं, voluntary and involuntary. इसी तरीके से then we have a different HR matrices in terms of recruitment and in terms of absenteeism. You can see the cost of absenteeism matrices, then you can see cost of turnover, HR to employee ratio, HR cost per FT. HR to employee ratio is very important. Usually the standard practice for of having an HR to employee ratio is 200 employees. So there is a saying that for every 200 employee we need one HR person. So this is a standard benchmark. Obviously we can't follow in every business situation, we can't follow in every situation. So obviously we need to look at our business situation, we need to look at our business obviously model, then we can follow these type of standard benchmarks. Then we have HR cost per FTE. That's mean that what is the HR expense. So sometimes organization treat HR as an expense, they don't treat HR as a business partner or as an investment. So obviously we really need to identify like what HR cost per FTE is. So it will basically make us decide कि हमने अपनी HR cost को कैसे manage करना है. Sometimes HR cost ज़्यादा होने की वजह से it will directly affect our bottom line. So I'm sure you all know what bottom line is. Bottom line means आपका profit of the company. So again, then we have time until promotion, promotion rate. How can we identify promotion rate of an employee or during the appraisal period? Sometimes ये चीज भी हमें identify करनी होती है. Then there are some more HR matrices related to workforce, related to recruitment. You can see average age. If I ask you to find out the average age of an employee, so किस तरीके से वो calculate करते हैं, then obviously average length of service. So these are really important HR matrices that help you in making effective decision as far as the employees matters are concerned, right? Then again, retirement rate, average distance from home. Now people are more inclined toward hybrid model. People are more inclined towards remote jobs. तो obviously जितना distance कम होगा, जितने kilometers कम होंगे, it will attract your employees, it will attract the potential candidates. तो बड़ा important है, you need to identify कि जो आपके पास current workforce है उनका क्या average distance है from their home, engagement rate क्या है. Sometimes you can see, I'm sure जितने participant हैं वो सारे HR से उनका ताल्लुक है. तो you see in your organization that organization runs employee engagement survey. Employee engagement survey वो run कर रहे होते हैं, and they just need to identify like what is the satisfaction ratio or what is the satisfaction rate of an employee, like employee कितने satisfied हैं, employee कितने motivated हैं और उनकी engagement ratio क्या है. So then there is satisfaction rate. Satisfaction rate obviously linked with the engagement rate. जितनी high engagement होगी उतना employee satisfy होगा. कैसे हम ये चीज identify कर सकते हैं? We can look into it. Then obviously salary hike since last year. You can say that this is the most important formula as far as the number are concerned from the compensation point of view. When you need to identify that what would be the percentage of hike as compared to last year, you need this formula, salary hike
since last year, like कितने लोगों की आपने salaries बढ़ाई हैं, उनकी क्या percentages हैं. So obviously it will help you to identify कि किस तरीके से आपने अपने payroll को and किस तरीके से आपने अपने HR expense को जो है वो manage करना है. Then there are some HR matrices related to recruitment. Obviously, time to fill is one of the important HR matrices. HR matrix from the recruitment point of view is concerned. Obviously, time to fill, time to hire. जितना आपका time to fill आपकी organization का ज़्यादा होगा, it means that business suffers loss because the person was not available and you are not sure कि उनकी जगह कौन काम कर रहा है. So obviously, it's really important कि मिनिमम लेवल पे टाइम टू फिल हो ताकि जैसे ही पोजीशन वेकेंट हो वैसे ही आप ऑन बोर्ड करवा सकें. सो लेट्स से यू हैव अ डेटा एंड उस डेटा की बेसिस पर आपने अगर टाइम टू फिल को आइडेंटिफाई किया हुआ एंड यू फाइंड आउट that the average time to fill for each position is 40 days. It means that for every vacant position आपका जो न्यू रिसोर्स है वो 40 डेज में आपके पास ऑन बोर्ड होता है. ऑब्वियसली 40 डेज में अगर वो ऑन बोर्ड हो रहा है तो उसकी ऑन बोर्डिंग का कुछ टाइम होता है एंड ऑब्वियसली आप किसी भी नए एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके पास फॉरन आते ही आपको जो है वो डिलीवरेबल्स देना शुरू कर देगा. यू समटाइम्स ही और शी नीड सम टाइम्स टू सेटल इन, ऑब्वियसली टू डिलीवर द रिजल्ट्स. तो एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में आते आते उसको ऑन बोर्ड होते होते सेटल होते होते तकरीबन ऑन एन एवरेज 2 से ढाई महीने लगते हैं. एंड ऑब्वियसली वी नीड टू आइडेंटिफाई कि किस तरीके से इसको जो है वो कम किया जा सकता है. कुछ कंपनीज में ऑलरेडी टैलेंट पूल्स होते हैं, टैलेंट पूल्स मैनेज वो कर रही होती है एचआर टीम एंड वंस द पोजीशन become vacant they have all the options to fill those vacant position और obviously वहाँ पर वो उसको fill in कर लेते हैं. Then cost per hire is another important concept जो कि HR matrices में use होता है. Cost per hire means कि आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट की है थ्रू लिंक्डइन, थ्रू roji.pk, mustaqbal.com एंड जो भी आप expense करें, if you hire any consultant, so let's say जैसे I'm working with different companies as an HR consultant and I basically help them in talent acquisition processes and talent acquisition people. So what they do is they basically give me some sort of amount after filling the position. So obviously my amount is calculated as cost per hire for them. तो वो ऑब्वियसली मेरी अमाउंट को ऐड करेंगे. फिर अगर कोई उन्होंने ऐड दिया हुआ है, कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला हुआ है, तो वो ऐड भी ऐड हो जाएगा, वो कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी उनके कॉस्ट पर हायर में. देन वी हैव सोर्स ऑफ हायर. समटाइम्स वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस एचआर मैट्रिक्स एज वेल बिकॉज you never know कि आप अगर if you're not looking at this HR matrix source of hire, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके पास रिसोर्स कहाँ से आ रहा है. Sometimes we use LinkedIn, sometimes we use Indeed.com, Mustaqbal.com, Roji.pk. So there are different forums, there are different channels. Sometimes we use Facebook groups, sometimes we use WhatsApp groups. So it is really important from an HR perspective that you are managing the source of every candidate, right? Because it will help you in the future run if you have any positions in future and you know that this position last time filled through Facebook group. So what you will do is you will basically post the ad of that particular position in the WhatsApp group so that you can in the Facebook or WhatsApp group so that you can get the relevant individuals from that groups. So it is really important to identify all of these information, all of these data, so that you can basically help your HR team or help your function to become more productive, to become more effective, right? So it is really important to understand all of these data. Then we have more matrices. If you can see that first year resignation rate. So this is very important. Sometimes we hire people, but they usually leave the company within 3 months, within 2 months, within 4 weeks, within 6 months. So it is really important to identify that how many employees have left our organization in the in the time of probation, because it will help you to understand that there is some gap or there is some problem in the onboarding process. अगर ये percentage बहुत ज़्यादा है, it means that कि कोई problem है, कोई issue है onboarding process में, right? So this HR matrix is really important. Then obviously hiring manager satisfaction. Obviously sometimes we hire people, but होता क्या है कि जब हम hire कर लेते हैं तो hire करने के बाद जब वो manager के पास जाते हैं, sometimes manager are not satisfied with the performance of the candidate,
and they basically ask that हमने किस individual को hire कर लिया. तो अगर probation के बाद आपने ये चीज़ identify करनी है कि how many hiring managers are satisfied with your recruitment or with your onboarding, तो obviously this HR matrix will help you to identify कि हम जो hiring कर रहे हैं या हम जो basically individual अपनी company में onboard कर रहे हैं in terms of skills, in terms of competencies, in terms of culturally fit, whether वो individual fit in होता भी है या नहीं होता, right? Then again, selection ratio. Selection ratio is again one of the important ratio as far as the recruiter performance is concerned. Sometimes recruitment has been done. Obviously, we have 20 CVs, we have 35 CVs, we have 30 CVs. But जब interviews होते हैं तो we didn't select any individual because CVs are not relevant. Pre-screening are not done right. So selection ratio is 0. So obviously फिर वहाँ पर we can question mark the performance of a recruiter that what are you doing, because अगर 30 CVs मुझे receive हुई हैं and उसमें से कोई individual भी select नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कोई ना कोई problem है, from the pre-screening के हवाले से, या कोई ना कोई problem है from sourcing के हवाले से. So we can obviously, if we have this data, then we can obviously easily talk to the recruiter that okay, I got 30 CVs, I got 25 CVs, but I didn't select any individual. So बड़ा important है कि आप इस चीज को understand करें कि selection ratio is very important. So let's say there is a recruiter who gives you 5 CVs and you found out that all 5 CVs are perfectly awesome, and obviously अब उन पांचों में से आपके लिए decide करना मुश्किल है कि आप किसको hire करें because they all are good, right? So now you can appreciate or you can recognize your recruiter for finding out some good CVs for the relevant position. If you don't know this information, if you don't know this data, then how can you track out some recruiter person, or how can you track out, or how can you recognize or appreciate your the best recruiter? तो बड़ा important है कि आपको इस information को और इस data का भी पता हो. Then obviously next part is offer acceptance rate. So as we all know that जब हम interviews कर रहे होते हैं और जब हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं तो वी ऑलवेज कीप कैंडिडेट्स एट द बैकअप. समटाइम्स जब हम ऑफर करते हैं कैंडिडेट्स को और वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, या उनके जो करंट एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उनको होल्ड कर लेते हैं या उनकी कॉम्पनसेशन इंक्रीज कर देते हैं, तो समटाइम्स वी हैव बैकअप एट द बैक कि ताकि अगर एक कैंडिडेट मना करता है या ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, देन वी हैव एन अदर कैंडिडेट हु कैन जॉइन अस. तो ऑफर एक्सेप्टेंस रेट का मतलब ये होता है कि जितना अच्छा आपका ऑफर एक्सेप्टेंस रेट होता है, इसका मतलब ये है कि योर ऑनबोर्डिंग टीम इज डूइंग ग्रेट वर्क. बिकॉज अगर 5 लोगों को आपने ऑफर दी है एंड 4 लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब है कि आपका ऑफर एक्सेप्टेंस रेट इज 80%. एंड अगर आपके एचआर ने 5 लोगों को ऑफर किया है, दे ऑफर 5 इंडिविजुअल्स एंड दे ऑल आर एक्सेप्टेड द ऑफर, इट मींस दैट द ऑफर एक्सेप्टेंस रेट इज 100%. Right? So that's how the important data is. Then again, the vacancy rate means that how many unfilled position or how many vacant positions that you have right now in your organization. So let's say the total headcount of your company is 400 and the total position, so it is not mandatory that अगर आपका headcount 400 है तो आपकी positions भी 400 होंगी. There is a possibility, and I'm sure there's a possibility that आपकी जो total positions होंगी वो 30, 40, 45 होंगी, because there would be more finance officers. So the position is one, the finance officer, but there are multiple people who work on the same position. तो अगर आपने vacancy rate मालूम करना है या vacancy की percentage मालूम करनी है, so how can we identify that vacancy rate? So we can easily find out by applying this formula, the total number of open position divided by total number of position in organization. That's how we can identify vacancy rate within the organization. So there are some interesting HR matrices that we talk about, and obviously we will do the calculations as well at the end of at the second part of the session. But before we go into the calculation part, we really need to discuss the theory part of HR analytics and HR matrices. So moving up again to understand the process of HR analytics, like what HR analytics is, what HR matrices is. So सबसे पहले, so as I talked to you that
HR matrices are different KPIs or different key performance indicator by which you can assess the performance of, or by which you can assess the productivity of your HR team. And these HR matrices helps you to understand or to make effective decisions about the organization. Then what is HR analytics? So there's a thin line difference. The difference of thin line between HR analytics and HR matrices. So as I talk about HR analytics, so HR analytics is more about HR connecting your HR matrices data with the business. So let's say you see that your time to fill is 40 days, right? 40 working days or 40 calendar days, and there are some urgency in your business that you need people on a very quick basis, and you can see the data that जो हमारा time to fill है, that is 40 days. 40 days is too much from the urgency perspective, right? So what you can do is, so you basically question mark, you can ask question from HR team that, so you guys know the urgency of the business, that we need people on a very quick manner, but the HR team is not doing good because the time to fill is 40 days. So obviously, so what you are doing is you are basically connecting the HR matrix with your business, right? So you need to get the position fill ASAP, but your HR team is not doing that, and they are taking 40 days to fill that position. So what you will do is you will push HR team, you will push HR team, you will motivate HR team to get this done ASAP as soon as possible. So this is how you are basically connecting your HR data with your business. So this is the difference between HR matrices and HR analytics. Then there is another part, that is HR dashboard. HR dashboard is basically uh, the dashboard where all the performance indicator is showing in a single manner, in a single sheet. So you don't need to go to different sheet for different HR matrices. You have one sheet, and in which all the data is showing, all the data is visible, so that you can make all the data, you can play around, and you can basically work with them and make effective decision on the basis of that. Then there is another term, that is hypothesis. Hypothesis basically mean to make assumptions, to basically to give a statement about certain outcome. So let's say you don't have data, and in your company you find out that there is a high attrition rate, high turnover rate, and let's say the turnover rate of your organization is uh, 20 employees per month, and you were like, this is too much. And we if अगर मैं इसकी percentage निकालता हूँ, तो इसकी percentage is usually around 40% of total placements or total headcount, and that is too much. So the industry practice, the industry benchmark is that the best attrition rate within the company must be between 77 to 8%. And if your attrition rate is 40%, it means that there is something wrong in your culture, there is something wrong in your onboarding process, there is something wrong in your engagement, employee engagement part, or there is something wrong in any other part of the from the HR perspective. So let's say you find out that the attrition rate is 40% of your company, and you just pass the statement that because the culture is not good, that's why people are leaving. So this is the hypothesis, that you are making a statement, you are giving a statement about the outcome, but you don't have the actual data. So might be there's a possibility that people are leaving because of the compensation. Might be there's a possibility that people are leaving because of the bad managers. So you don't have data, and you are giving a statement on the basis of the outcome. So that's what the hypothesis is. Then we have the another part, that is the onboarding part. Onboarding part means once your employee joins in, and your onboarding team is basically making them comfortable, obviously giving them the orientation about company vision, company mission, company values, company culture, about their job description, about their manager, connecting them with their managers, with their team, so that they feel comfortable, they feel settled in within the organization. So there's a beautiful saying that जितनी अच्छी आपकी onboarding होगी, जितना अच्छा आपका onboarding process होगा, उतना जल्दी आपका जो new employee है वो settle in हो जाएगा within the organization. So it is really important from the onboarding perspective that your onboarding must be so aligned and so synced that the new employee will not get uncomfortable, right?
So it is really important. Then the next part is return on investment. We call it ROI. So ROI basically means return on investment. Return on investment means sometimes you invest uh, some expense or some amount in your training. Sometimes you invest some dollars on the employee training, and at the end of the day you will ask for, so what could be the return on that investment? If people are growing, if people are getting new skills, if people are basically getting more skills, then obviously it means that you are investing money in the right manner. And if people are not getting any skill, or people are not getting any competency, obviously वो नहीं learning हो पा रही, वो उस तरीके से skills को नहीं सीख पा रहे, it means that the return on investment would be low. And if return on investment would be low, then the management would resistance in investing more amount on the training purpose. So the ROI is really important from the HR perspective, from the training perspective. And these are the 6 terms that we talk about, like what is HR matrices, what is HR analytics, HR dashboard, hypothesis, onboarding, and ROI. Then the next part in this is, so what is HR analytics? We already talked about analyzing data about people to solve business problem. So we have different amount of data. We have the data about the age of the employee. We have the data about the marital status of the employee, about the total experiences, how many company they have switched earlier, what is their qualification, uh, what is their current salary. So we have a good amount of data from people perspective in this, right? It means that so there are some data that you need to identify, and help it the data will help you in making good decisions, right? So what this is what HR analytics is. The next part is, so why we use HR analytics data. So number one is obviously to identify and to assess the performance, well-being, and inclusion and diversity of employees. So let's say your HR manager asks you to identify the gender diversity in your organization. So what you will do is, so you will apply the formula for gender diversity, and you will easily find out that what is the gender diversity ratio in your organization. When we say gender diversity, it means the male female ratio in your organization. So let's say your management is more inclined toward hiring females within the organization, and right now the gender diversity ratio of your company is 95 to 5%. Means 95% are male and 5% are females. It means that you really need to work on the gender diversity ratio, because your management wants to do work on it, and they want more females within the team. So now what you will do is, whenever you are interviewing or whenever you are basically posting an ad on social media, you will be looking for more females, so that your gender diversity ratio would get better. But अगर आपका ratio 95% है, male female का 95 5% है, and you are not hiring female individual, however your management team looking for more females, it means that you are not working on the objective of the company. So it is really important कि आपको ये पता हो कि जेंडर डाइवर्सिटी रेशियो क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रेशियो क्या है, एम्प्लॉय motivation ratio क्या है. So these all are really important as far as the inclusion and gender diversity ratio is concerned. Then obviously these matrices will help you to identify or to assess the performance of your workforce and organizational performance. So let's say you do engagement survey in your organization, and you found out that people are not very engaged, people are not very satisfied, people are not very motivated. So what you will do, you will do some different activities, some different engagement activities. You will do some work on you with your culture team to make your culture more happening, more effective. But if you don't have all of these data, if you don't have the data for of employee engagement, if you don't have the data for employee motivation, then how would you improve that? You can't improve that, because you don't have the data. आपके पास वो data ही नहीं है जिसकी basis पर आप उसको improve कर सकें, right? So उस data का होना बहुत जरूरी है, and उस data को use कैसे करना है, that's what tells you HR analytics, right? So these are the reasons why we use HR analytics. Then the next part is,
Obviously, sometimes we publish HR policies within the organization, and people are not motivated and people are not happy with those policies. So you can run a Google form in your company to identify that, so which policies are more employee friendly. Now companies are more looking towards employee friendly environment, employee friendly policies. So if you are not focusing as an HR in all of these things, it means that you can't retain employees. Now the competition is so high, so your employee will get another job within a week. So बड़ा important है कि employee retention पे काम किया जाए, and by implementing all of these data, and by knowing all of these data, you can easily work on this. Otherwise it will be a chaos from the HR perspective. Then the next part is obviously the HR analytics data will help you to identify uh, financial and social return on investment. So obviously, if you have the data, so you can see that, okay, this year I've invested this amount on the training of employees, and this is the ROI of my investment. Again, you can see the data, you can see the number of payroll, and in this payroll you can easily identify that how can we manage our payroll. If you feel that the cost is getting high of the payroll, तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से अपने बेनिफिट्स को मैनेज किया जा सकता है, ताकि उसका इम्पैक्ट ऑन बॉटम लाइन ज़्यादा ना हो, उसका इम्पैक्ट जो है वो बॉटम लाइन ड्रास्टिक ना हो. So it is really important to identify all of these data to make effective decisions. So up till now we have discussed two things. So we have discussed like what is HR analytics, what is HR matrices, what is onboarding process, what is ROI, and then in the next part we have discussed that what could be the reasons of using HR analytics. And it is really important to identify all of these type of data, because it will affect your if it will affect the performance and productivity of your employees in the organization. So in my last assignment with the Vago as head of HR, so there is a saying from the board that is, in retail we only talk about two things: people and product. And obviously if you can't manage one, you can't manage both. अगर आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास दो ही चीजें हैं जिसको आपने मैनेज करना होता है, एक प्रोडक्ट या सर्विसेज आप कह लें, दूसरा आपके पीपल. And if you can't manage one of them, so obviously it will be a chaotic for the business, right? So moving further, the next part is obviously HR analytics data help you to identify or to enhance employee morale, employee motivation, employee satisfaction, because you are doing some certain of activities for employee engagement, from the perspective of organizational development. So this is really important to have a right set of data, to apply a right set of HR matrices to get the results, obviously to get the outcome. And on the basis of outcome, you basically do all of the activities for the future from the future perspective. The next part is obviously, if you don't have a data for let's say termination, आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं छोड़ के चले जाते हैं, and your HR team is not focusing on the exit interviews. अगर exit interview का कोई डेटा नहीं है, how can you say that the people are leaving because of this reason? You can't say that, because आपके पास कोई डेटा नहीं है. And you can give in a statement about people leaving, and that would be the hypothesis, but you don't have the actual data, you don't have uh, the data by which you can justify things, right, by which you can improve things. So it is really important to have all of these data, because it will help you to improve your retention rate, to improve your attrition rate, because nowadays in every organization the retention is the key. From the HR perspective, if you can easily retain your employee, it means that you are doing good in terms of culture, in terms of organizational development. So बड़ा important है ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि आपका रिटेंशन रेट क्या है, एंड उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. वो रिटेंशन किन वजह से, एट्रिशन किन वजह से है, लाइक लोग कॉम्पनसेशन की वजह से छोड़ के जा रहे हैं, लोग कल्चर समझ में नहीं आ रहा, जो कंपनी पॉलिसीज हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, वो काफ़ी मुश्किल हैं, जिसकी वजह से चीज़ें समझ में नहीं आ रही. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स by which you can easily improve your retention rate, right? Then the next part is obviously
the aim of people analytics. Now there's a term that we use in HR, that is people analytics, and now organizations are working on this factor as well, because they need to set the strategy for the rest of the year. अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर आप उस डेटा को समझ नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, then it will of no use. So it is really important to have the data and then make a use of it. So why we use HR analytics? What could be the aim of HR analytics? And that could be obviously connect, enable and measure. सबसे पहले obviously आप people data को connect करते हैं with the business data, and that is what HR analytics is. Then उसके बाद obviously you do some calculation, you do some analysis, and on the basis of that analysis you basically measure HR effectiveness in the company. If you don't have data, if you don't know how to use that data, you can't measure employee performance, you can't measure employee productivity, you can't measure HR productivity, you can't measure HR effectiveness. So it is really important to have all of these data, and you are, or your team is able to connect the HR data or people data with the business, and then do some analysis from the people perspective, like what their average age is, what they do, like engagement ratio क्या है, satisfaction ratio क्या है, training पे जो मैं expense कर रहा हूँ, उस expense को करने की वजह से मेरा return on investment क्या है, लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उनके reasons क्या हो सकते हैं, ताकि you can tap that area. लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आपको पता चल गया कि रीजन जो है वो कल्चर है, तो आप आराम से कल्चर पे काम कर सकते हैं. बट अगर आपको यही नहीं पता कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, यू आर गिविंग assumptions, यू आर गिविंग hypothesis, नहीं लोग छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज कॉम्पनसेशन कम है, और लोग छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज हायरिंग मैनेजर सही नहीं है, इट मीन्स दैट यू आर टैपिंग द रॉन्ग डोर. And if you're tapping the wrong door, it will not resolve your problem. Your attrition rate becomes high and high. You can't resolve that. So it is really important to have a right set of data, right set of analysis, and then you can make decision on those. It is really important from people perspective. So moving further, so we can see that we have already seen that. So the aims of people analytics are three, and they are connect, enable and measure. Then there are three levels of people analytics, or you can say HR analytics. Number one is descriptive analysis. Number second is descriptive analysis with using multi-dimensional data, predictive analytics and prescriptive analytics. So let me explain you one by one. So descriptive analysis means that you have the data, and obviously you know the reason of it. So let's say if I ask you, someone in HR department, so what was the attrition rate of last month? You say that, so the attrition rate, the turnover rate of the last month for a company is, let's say, 20%. So this is descriptive analytics, right? And then if I ask you, what could be the reason of 20% of attrition? Now you are saying that Huzair, so 20% का जो रेशियो है वो जिस तरीके से है कि इन 20% में से 10% लोग ऐसे हैं जो कल्चर की वजह से छोड़ के गए, 5% लोग ऐसे हैं जो कॉम्पनसेशन की वजह से छोड़ के गए, 3% लोग बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए गए, एंड 2% लोग ऐसे हैं जो कि हायरिंग मैनेजर की वजह से गए. So now you have the data and you are connecting the data with some other data. So this is second level of HR analytics, descriptive analytics with multi-dimensional data, right? So आप दो reasons को merge करके आपके पास एक outcome आ रहा है. Then तीसरा, the third part, the level 2 is predictive analytics. So you can easily identify that. So let's say I'm giving an example. So I'm currently working with a Canadian company as a consultant, सही है, और वहाँ पर क्या होता है कि right now in December, so the temperature of Canada in Calgary, Vancouver or Ontario or Saskatchewan is very high, is मतलब -40, -35 रहता है, right? So and is in महीनों में, like from December till Feb, till March, the hiring is very challenging, right? अगर कोई छोड़ के जाता है, वैसे तो लोग छोड़ के नहीं जाते इन महीनों में, because they basically work on the same position. But अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो इस इन महीनों में वहाँ पे hiring करना is a very difficult and tough task. So what basically they do is, so they basically keep the pool, and we can easily identify that, we can easily predict that, okay, in December कनाडा में जो हायरिंग होती है वो काफी कम होती है, तो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में भी हायरिंग काफी कम होगी,
तो हमने क्या करना है, हमने पहले अपना पूल बना के रख लेना है, हमने पहले अपनी सारी ऑनबोर्डिंग कर लेनी है, ताकि दिसंबर में अगर कोई पोजीशन आउट भी होती है, कोई पोजीशन वेकेंट भी होती है, सो वी वुड हैव द पूल, एंड उस पूल में से हम यूज कर लेंगे अपने रिसोर्सेज को. सो दैट इज व्हाट प्रेडिक्टिव एनालिसिस. देन द नेक्स्ट पार्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इज कि आपने वो एक्शन लेना तो है, बट उस एक्शन को किस तरीके से लेना है, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, right? So there are three levels of analytics that you need to identify and then you need to know is descriptive analytics with multidimensional data, then predictive analytics, and then prescriptive analytics, and you need to know all of these things, right? So the next part is I've already told you कि descriptive analytics क्या होता है. आपने absenteeism मालूम करना है, आपने turnover मालूम करना है, आपने जो है वो लीव रिकॉर्ड मालूम करना है, आपने एवरेज एज मालूम करनी है, आपने एवरेज टर्नओवर मालूम करना है, आपने एवरेज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मालूम करना है. इन सारे डेटा को मालूम करने के लिए आप बेसिकली जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं उस लेवल को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन पार्ट. कैलकुलेशन पार्ट के बाद दूसरा पार्ट आता है, दैट इज जब आप उस कैलकुलेशन को बेसिकली लिंक कर रहे होते हैं विद योर बिजनेस डेटा. मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे बताइए कि आपकी कंपनी में जो एट्रिशन रेट है वो 20% है. इस 20% का रीजन क्या है? अब आप मुझे बताएंगे कि 20% के ये ब्रेकअप्स हैं. तो दैट इज द लेवल 1A, जहां पर आप लिंक कर रहे होते हैं विद वन डेटा टू अनदर रीजन, राइट? सो दैट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यूजिंग मल्टी डायमेंशनल डेटा. देन तीसरा पार्ट आता है, सॉरी लेवल 2 आता है, दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जहां पर आप on the basis of past data, on the basis of previous data, आप basically predict कर रहे होते हैं कि last year in December we did only 2 hiring because of the weather. तो आप आराम से ये predict कर सकते हैं कि next year we will do the same number of hiring because the temperature is very low and because of the weather people usually don't leave their current organization. तो you can easily predict data on the basis of previous or history data. Then prescriptive analysis, where you basically merge descriptive and predictive analytics both, right? So let's say if I ask you to let's say launch a learning management system in your organization, okay? So you will say that the learning culture is not very good in our organization, but we can implement that. But if I ask you that how many people would be interested in your organization to avail this opportunity, you can give me the reason. Okay, the people are not very interested because they do their work, वो busy होते हैं, उनकी meetings होती हैं, culture नहीं है. So what you are doing is you are basically, so you're predicting data and giving me the description as well. Why they don't do this, right? So this is prescriptive analytics that we use in HR analytics or people analytics, right? Then this is the second last part of this presentation and we will move forward to the data part जहाँ पर हम सिर्फ calculation कर रहे होंगे. Okay, so the process is obviously सबसे पहले if you want to do the people analytics or HR analytics in your organization, so सबसे पहले what you will do is you will plan or you will basically schedule the goal of the process. Like आपको चाहिए क्या? So what exactly are you looking for, right? So let's say if you see that as a HR manager or HR leader in your organization, you see that the percentage of attrition is very high in your organization. So now you ask your HR team to work on the analysis of attrition, to work on the analysis of turnover. So that is a plan. Then you define the critical success factor of the data. Like what exactly I'm looking for. The critical success factor would be I really wanted to know the reason of the attrition. This is the critical success factor. जहाँ पर आप ये चीज़ उनसे पूछ रहे हैं कि भाई मुझे ठीक है, you need to tell me कि percentage क्या है attrition की, कितने लोग छोड़ के गए हैं, उनकी gender diversity क्या है, but I really need to know कि जो आप मुझे percentage बताएंगे, जो number बताएंगे, मुझे उसके reasons भी चाहिए कि वो 20 लोग क्यों छोड़ के गए, उनके reasons क्या हैं. So that reason is the critical success factor of the process. Because you really need to know the reasons of their leaving so that you can easily work on that. अगर आपको reasons ही नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि 20 लोग छोड़ के गए हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि आपने कैसे इसको improve करना है. So if you really want to improve the process, तो उसके लिए आपको data चाहिए and data के पीछे reasons चाहिए. And अगर reasons नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते. So that
reason is the critical success factor of the organization of the particular HR matrices. Then the third part is data audit. So data audit means this is really important. So इसको obviously आपने लीड, अगर आप लीड कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो डेटा आप गैदर कर रहे हैं, वो डेटा आपको मिल कहाँ से रहा है. लाइक आपके पास कोई HRMS है जहाँ से आप वो डेटा गैदर कर रहे हैं, आपके पास कोई HR पोर्टल है वहाँ जहाँ से आप डेटा गैदर कर रहे हैं, या आपको किसी एम्प्लॉय ने बना के डेटा दे दिया कि हुजैर दिस इज द डेटा और हमने इस पे वर्किंग करनी है. सो यू कांट जस्टिफाई दैट डेटा बिकॉज वो एक इंडिविजुअल ने बना के दिया है. देयर इज नो सिस्टम बिहाइंड इट, देयर इज नो ट्रैकिंग बिहाइंड इट. सो यू रियली नीड टू नो, यू रियली नीड टू ऑडिट द डेटा. भाई जो डेटा आ रहा है आपके पास, ताकि जो आउटकम आपके पास निकले वो आउटकम टू द पॉइंट हो, ना आपकी टीम का टाइम वेस्ट हो, ना आपकी मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट हो, और जो डेटा आपके पास आ रहा हो वो टू द पॉइंट डेटा चल रहा हो. देन द नेक्स्ट पार्ट इज डिजाइन प्रोसेस. डिजाइन प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे. सो आई कैन मर्ज दीज टू स्टेप्स, डिजाइन प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजी, कि आपने किस तरीके से इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है. अपने डेटा पॉइंट्स कौन कौन से आपके पास होंगे. सो लेट्स से फॉर कलेक्टिंग डेटा you will be using or you will be extracting data from the HR system, from Excel, from past reports, from Google Sheets, from different departments. वहाँ से आपको डेटा मिल रहा होगा. उस डेटा के बाद नेक्स्ट स्टेप, आपका नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी कि आप उस डेटा को सबसे पहले क्लीन करेंगे. क्लीन करने के बाद आप उसको ऑडिट करेंगे. ऑडिट करने के बाद आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि आपने किस चीज़ पे काम करना है, उस चीज़ पे आप काम करना शुरू करेंगे. आपने अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को बेसिकली डिफाइन किया हुआ है. आपकी टीम को पता है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है और किस बेसिस पे आपने काम करना है. एंड वंस आप उस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पे काम कर रहे होंगे, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, और you can easily work on that, right? तो ये सारी चीजें जिसकी बेसिस पर आप जो है वो स्ट्रेटजी वाला पार्ट कवर कर रहे होंगे. देन द नेक्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा. ऑब्वियसली कलेक्शन, स्ट्रेटजी एंड आपका जो प्रोसेस है ये सब एक साथ आएंगे, बिकॉज दिस इज द एंटायर प्रोसेस दैट यू विल बी डूइंग टू कलेक्ट एंड टू ऑडिट द डेटा. Then the next part, the most important part is analyzation, जहाँ पर आप उस डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे from different perspective, कि भाई लोग क्यों छोड़ के गए, क्या reasons हैं. उस डेटा को आपने ऑडिट भी कर लिया. now you are using different formulas, different calculation, different tools of Excel to identify the reasons, to identify the tool, or to identify the reasons of that particular HR matrices. So that part is very important. और यहाँ पर आपको different formulas का पता होना चाहिए कि जो formulas आप use कर रहे होंगे. Then the next part is report. Report means once you have done the analyzation part, you have already identified that these are the critical success factor, and you have already identified that these are the outcome of the results. तो उसकी basis पर आप report और उसकी evaluation बना रहे होंगे. And evaluation में आप mention करेंगे कि what process did we follow, and obviously रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है और उस इवैल्यूएशन का जो फॉर्मेट होता है कि आपके डेटा पॉइंट्स क्या आते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स कौन है, स्टेक होल्डर्स के अलावा आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या थे जिस पे आपने जो है वो चीज़ों को डिफाइन किया है. ऑब्वियसली डेटा के पॉइंट्स क्या थे, डेटा आपने कहाँ से पिक किया है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से थे. एंड उस रिपोर्ट में आपने अपनी एनालिसिस मेंशन किया है कि ओके, सो वी हैव डन दिस एनालाइजेशन, और उसकी बेसिस पर हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई किया है, एंड उसके ये रीजंस हैं, उसके फर्दर एक्शंस क्या होने चाहिए, उसकी फर्दर रिपोर्ट क्या बननी चाहिए. सो यू विल बी बेसिकली प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस, ताकि जब वो रिपोर्ट आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, सो दे हैव ऑल द रीजंस टू टेल यू ओके, सो नाउ वी हैव फाउंड आउट कि ये रीजंस हो सकते हैं एट्रिशन के. नाउ वी नीड टू वर्क ऑन द कल्चर पार्ट, we need to work on the employer branding part, we need to work on the employee engagement part. हमने लोगों की engagement करवानी, लोगों की activities करवानी, लोगों को culture में involve करना है, succession planning करनी है, इसके अलावा 9 box matrix पे काम करना है, हमने उनको different activities में involve करना है, उनको autonomy देनी है, उनको empower करना है. So ये वो सारे reasons हैं जो आपने identify किए from the report, from the analytics report, जिसकी basis पर आप decisions ले रहे होंगे in the future run. So this is the entire process of HR analytics. Then now these are the HR matrices that we talked about, जिसमें हमने शुरू में भी बात की थी कि हमारे पास कुछ matrices हैं from performance perspective, कुछ matrices हैं हमारे पास recruitment perspective, कुछ journal workforce matrices हैं, कुछ हमारे पास जो हैं वो vacancy, training और offers के हवाले से हैं, right? So these are the
basically HR matrices that we use for our HR analytics and for people in analytics, ताकि हमारे पास clear picture आए कि exactly what we want to do, exactly वो कौन से outcomes होंगे जो हमने basically हम ले रहे होंगे, right? अगर यहाँ तक किसी participant को कोई सवाल है, you can write your question in the chat box, so I can view it, and obviously I will give the response to it. So if you don't have any question, please let me know in the chat box that you are understanding the topic, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैं बात कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रही है, and then we can move forward to the Excel sheet and we can do the calculation part. Let me know if you have any question in the chat box, please. I'm waiting for your response to all the participants. Please let me know if you have any query in the discussion that we had about HR analytics, about HR matrices, and about ROI, about onboarding, so that if there's no query, then we can move forward to the next part, and the next part is more about Excel. It's more about the data. So up till now we have discussed all of these things, like what HR matrices is, what is HR analytics, what is ROI, uh, what could be the reasons of using HR analytics, and again uske baad we have discussed like what are the objective and what is the process of HR analytics, जहाँ पे we talked about plan, critical success factor, obviously पे डेटा ऑडिट के बाद हम obviously प्रोसेस पे काम करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी एनालाइजेशन होती है, उसकी रिपोर्ट बनती है, उसको इवेल्युएट किया जाता है. So there are some HR matrices that we talked about. Now we are basically moving forward. So मैं करूँगा ये कि I will request Nuruddin Saab to share this presentation to all the attendees that we have, and presentation भी share कर लें आप लोगों के साथ, and obviously I have एक्सेल फाइल, सैम्पल डेटा फाइल, वो भी आपके साथ शेयर कर लें ताकि आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद हों फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एच आर एनालिटिक्स, इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल एनालिटिक्स, ताकि आप उस चीज़ को एक दफ़ा रिव्यू कर सकें, एंड यू हैव ऑल द डेटा इन द एक्सेल शीट जिसको आप यूज़ करते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू द एक्सेल शीट, जहाँ पर आई विल बी यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज, आई विल बी यूजिंग different functions of Excel to basically do the analyzation part, ताकि हम वहाँ पे इस चीज़ को understand कर सकें जो अभी तक हमने पिछले 1 घंटे में cover की है. Right? So moving forward to the Excel sheet. Can anyone tell me in the chat box that मेरी screen आपको visible हो रही है Excel के हवाले से? तो मुझे बता सकता है chat box में अगर आपको screen दिख रही है मेरी Excel के हवाले से.
मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? अगर प्लीज विजिबल है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें मैसेज करके कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, ताकि आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस डेटा. So this is the data. This is the data basically, and let me see. मैंने यहाँ पर सो यू कैन सी कि मेरे पास जो टोटल हेड काउंट है सैन फ्रांसिस्को में वो 354 हेड काउंट है. टोटल वर्कफोर्स जो काम कर रही है यूएस में वो 354 एम्प्लॉइज की है. So now the same process I will apply for New York, Dubai, London and Singapore. So what I will do is I will basically just copy paste data, but मुझे इसमें एक चेंज ये करना होगा कि मुझे यहाँ पर इस फॉर्मूला में so okay, so you can see the is equal to count f sample data मैंने वहां से पिक किया दूसरी शीट में से, and then head count a2. so a2 मैंने सैन फ्रांसिस्को पिक किया, बट जब मैं न्यूयॉर्क की बात कराऊंगा तो मुझे यहाँ पर a3 चाहिए होगा. so मैं करूंगा ये कि मैं कॉलम a को जो है वो लॉक कर लेता हूँ. कॉलम a को मैंने लॉक कर लिया, दैट इज डॉलर बाय डॉलर साइन, और यू कैन सी दैट डॉलर a साइन मेरा कॉलम वो हो गया. नाउ अब मैं क्या करूंगा, जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा to another columns control C and then control V. So you can see that New York में जो मेरे पास total head count है वो कितना है 682.
अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, आई जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट दिस डेटा फ्रॉम रो B3 टू सेल B4, B5 and B6. So you can see that the total headcount of the company is 1470, right? And अगर मैं इसको further break कर दूँ into a location, तो सिंगापुर में I have 79 employees, लंदन में 216, दुबई में 139 and न्यूयॉर्क में 682 and सैन फ्रांसिस्को में US में we have 344 employees, total headcount of employees and San Francisco, right? So that's how you can easily calculate your headcount data. Now I need to make a chart of this. मुझे इस डेटा को प्रेजेंट करना है अपनी टीम, अपनी मैनेजमेंट को. So what I will do is, so I can do easily select the data, select both the column. I will go to insert tab. Insert tab में you can see at the mid of this tab you will see different charts. So because right now we are talking about volume, we are talking about numbers, तो इसके लिए हम जो chart use करते हैं that is the column chart. So I go to column chart and you can see, sorry, I didn't pick the right data. So so I picked Singapore and मैं इस डेटा में गया. So now you can see कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ आ गया है according to the location, right? और obviously अगर मुझे इस चार्ट को एडिट करना है तो मैं यहाँ पर जाकर इसमें different इसमें changes कर सकता हूँ. So let's say I want to add numbers above this bars. So I will just need to select data labels ताकि मुझे पता चल जाए कि किस लोकेशन पर कितने लोग हैं, right? किस लोकेशन पे कितने लोग हैं. So you can easily find out this type of data, right? So this is very easy कि आप किस तरीके से अपने head count को जो है वो find out कर सकते हैं. Then the next part is, so let's say मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास total resignation कितने. So what I will do is, so first of all now what I'm doing is मैं basically pivot table बना रहा हूँ. और pivot table बनाने के लिए आपने करना ये होता है कि आपने उस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना होता है जो डेटा आपके पास है. जैसे मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, राइट? नाउ आई गो टू द इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मैं गया पिवट टेबल वाले ऑप्शन पे. एंड इफ यू कैन सी दैट so he's asking you about the sample data range. So range में यही रखूंगा and we always use new worksheet to basically to make a pivot table. तो मैंने new worksheet पे check रहने दिया and I just click on OK. So now you can see that यहाँ पर जो आपके पास pivot table आपको visible हो रहा होगा. So there is an Excel sheet जो कि एक नई sheet add हो गई है. On the left side you can see the pivot table format and on the right side there are pivot table fields that you can play around easily. So इस pivot table को आप use करके अपने इसी sheet पे dashboard बना सकते हैं, HR dashboard, and उसके साथ आप play around कर सकते हैं with your dashboard, right? So सबसे पहले so what I need is, so I need to find out कि हमारे पास जो है वो termination क्या है, termination कितने हैं, right? And then we will find out the reason of those terminations. So let's say सबसे पहले, so this is the pivot table field और pivot table के field के साथ you have 4 different basically option: filter, column, row and values. मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको यूज करते हैं. तो सबसे पहले I go to the termination type, right? So involuntary, voluntary and blank. इसका मतलब है कि वहां पे टर्मिनेशन नहीं है. और मैंने क्या किया, एम्प्लॉई किसी भी एक को आप पिक कर लें यहाँ पर एंड इसको आप मूव कर दे तो आपको पता चल, सॉरी, you can see count, right? So now you can see that, so there were so I don't need blank, right? I don't need blank. Blank का मतलब है कि these employees are currently stay with the organization, so I don't need black. So what I will do is I will select the slicer from the above tab और यहाँ से मैं slicer को pick करूँगा और slicer को pick करने के बाद I will check the termination type और you can see the slicer is there. और मैं जब इसमें voluntary और involuntary पे check लगाता हूँ तो you can see the total
terminations are 237. So now I need to find out the reasons of those termination कि भाई उन terminations के reasons क्या हैं, involuntary क्यों हुई हैं and voluntary क्यों हुई हैं. So what I will do is I will go to again pivot table field और यहाँ पे जाने के बाद I will check on the termination reasons. सही है, termination reason पे जब मैं check लगाता हूँ तो you can see the reasons. ठीक है कि inappropriate conduct की वजह से तीन लोगों को टर्मिनेट किया, इनसबऑर्डिनेशन की वजह से तीन. सो इनसबऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि दे आर नॉट वेरी गुड मैनेजर्स, राइट, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर टीम. पुअर परफॉर्मेंस की वजह से 5 लोगों को इन्होंने टर्मिनेट किया. एंड रिडक्शन इन फोर्स का मतलब है कि ले ऑफ्स हुए हैं, रिडंडेंसी हुई है, जिसकी वजह से 25 लोगों को इन्होंने डिस्चार्ज किया फ्रॉम द कंपनी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे द कॉम्पनसेशन टू दोज 25 एम्प्लॉइज. सो 36 लोगों का आपके पास रीजन निकल कर आ गया फॉर इनवॉलंटरी टर्मिनेशन. देन इफ यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके पास बेटर पे जो है जिसकी वजह से लोग छोड़ के गए वो 58 है, बेटर पे और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी 94. इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो रीजंस हैं जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका मेन रीजन है कि वो करियर ग्रोथ की वजह से जा रहे हैं. सो नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पार्ट, जहां पर आप उनको ये बता सकें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से आप उनको बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं, उनको लेवल अप कर सकते हैं. जॉब अबेंडन का मतलब है कि उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया विदाउट एनी रीजन 13, रीलोकेशन की वजह से 15 लोग छोड़ के गए एंड रिटायरमेंट 21 लोगों की हुई है. सो इट इज़ वेरी विजिबल, यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि आपके पास जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो करियर ग्रोथ की वजह से छोड़ के जा रहे हैं एंड बेटर पे की वजह से छोड़ के जा रहे हैं. देयर इज नो रीजन ऑफ कल्चर, देयर इज नो रीजन ऑफ पुअर मैनेजमेंट स्टाइल. तो ऐसा कोई रीजन नहीं है जहाँ पर एम्प्लॉय एंगेजमेंट के से लोग छोड़ के नहीं जा रहे. सो दो रीजन है जिसपे एज एन HR टीम मुझे काम करने की जरूरत है. नंबर वन इज द कॉम्पनसेशन पार्ट. कॉम्पनसेशन पार्ट का मतलब ये है कि मैं किस तरीके से लोगों की पे को इम्प्रूव कर सकता हूँ, नंबर वन. नंबर टू, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी. एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि जब कोई भी इम्प्लॉय इस वजह से छोड़ के जाता है, इसका मतलब है कि दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम किस तरीके से लोगों के ग्रोथ चार्ट को उनको बता सकते हैं कि लाइक व्हाट आर यू लुकिंग फॉर और किस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशन को हम मीट कर सकते हैं. सो 237 is the total number of termination in this company. Or now if I need to find out the total turnover rate of this company, so हमने ये चीज understand की थी. So the formula of total turnover rate is, so let me write it down, the formula. So the formula is total attrition divided by total number of headcount. सो हमारे पास जो टर्नओवर रेट है वो कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 237 डिवाइड बाय द टोटल हेड काउंट वाज 1470, राइट. एंड नाउ मैं इसको 100 में परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा. तो यू कैन सी दैट, सो द परसेंटेज इज 16% is the attrition rate of the organization, which is too high. In fact, because the average or the industry benchmark is 7 to 8% of attrition. But you can see that जो attrition है वो total 37% है, total 16% है. And if I need to break up this volume के इसमें मेरी जो percentage है वो voluntary कितनी है और involuntary कितनी है, so I need to find out that percentage as well. So for involuntary termination and then voluntary termination. Okay, so involuntary termination के लिए मैं क्या करूँगा is what I will do is, so I will divide this number 36 divide by 237, right. I will get my number, that is 236 divided by
Okay, so 36 divided by 237, that is 15%, and then voluntary termination would be is equal to this percentage, this number, divide by this number. So that would be 85% across. So 85% out of 100% of termination, 85% termination are voluntary and 15% termination are involuntary, right? So obviously the termination rate, the turnover rate is 16%, right? So ये जो चीज़ हमें clear हो गई है किस तरीके से हम terminations को identify कर सकते हैं and termination में types को हम identify कर सकते हैं और हम उसको जो है किस तरीके से find out कर सकते हैं. Next part is obviously, so this part is complete, the termination wala. The next part is I need to find out, let's say, gender diversity, right? So now I'm basically unchecking all of these data ताकि हम फिर आगे बात कर सकें. So uncheck this, and then I'm also unchecking this, right? So now अब मुझे gender diversity पे बात करनी है कि भाई gender diversity ratio क्या है. So what I will do is I will go to I will also delete this slicer as well. So what I will do is I will go to the gender, right? The gender part, and then I will check this. और check करने के बाद now I will go to again any number age bracket, and यहाँ पर उसको मैंने count में convert कर दिया. So right now you can see that, so the male female ratio, you don't know the percentage right now, but obviously if you can see the number, so the males are higher on the higher side and the female is on the lower side. 588 is a total female number and 882 is a number of our total males. So now you need to find out the ratio for male and female ratio, right? So अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर find out करवाना है. So let's say मैं यहीं पर, so I just need to add the male ratio and the female ratio, right? So what I will do is equal to this divide by this is equal to this divide by this. So you can easily track that. So the male female gender ratio is 60-40 in your organization. 60% are male and 40% are female. And if your company is basically looking around at this gender diversity ratio, then obviously you have a balance in gender diversity, because 60 they want 60 to 65% males and 40 to 45% females. तो obviously आपकी जो organization है वो इस criteria को meet कर रही है. But what if इस आपका ratio जो gender diversity का है वो 80-20 होता, then what you will do is, so you will obviously for this you will obviously need to improve your gender diversity ratio by hiring more females. Obviously once you hire more females, then आपके पास ये gender diversity ratio जो है वो improve हो जाता, right? So now the next part is so gender diversity part is clear, and we already talked about the liquidation, the attrition attrition of both types, voluntary and involuntary. The next part is, now I will uncheck this as well ताकि हम फिर next चीज की बात कर सकें. So let me remove the age and then male or female. Right, so now you can see in the sample data, अगर मैं sample data की बात करूं, now you can see in the sample data, so there are different columns जहां पर हम specifically बात करें employee satisfaction की, right? So इसका मतलब ये है कि इस organization में कोई ना कोई employee satisfaction survey हुआ है and उसकी basis पे result identify किए गए हैं कि, और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है that are 4 criterias. So might be यहाँ पर हो fair, average, good or excellent. Excellent means 4 or poor means 1, right? So उन्होंने सर्वे किया, सर्वे के बाद रिजल्ट आइडेंटिफाई किया. नाउ आई नीड टू चेक आउट कि मुझे पास कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं जो सेटिस्फाई हैं इन्वायरमेंट के साथ.
ऑब्वियसली अगर वो सेटिस्फाइड उन्होंने मार्क किया होगा 4, जो लेस सेटिस्फाइड उन्होंने मार्क किया होगा 3, जो बिल्कुल थोड़े से हैं वो उन्होंने मार्क किया होगा 2, और जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है विद द एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी दे मार्क्ड एज 1. So now I need to find out the employee environment satisfaction of the company. So what I will do is I will go to again sheet number 2, and I will pick employee environment satisfaction. Let me find out. Yes. So this is environment satisfaction. Obviously I need to find out that in the count manner, and then obviously I will put the age on it. And what I will do is I will do like this, right? Okay, so value field setting, I will put this as count. So now you can see that out of 1470 employees, 284 employees feels that they are not satisfied with the environment of the company, and this number is very critical and this is very huge, right? So we need to work on the employee environment satisfaction, environment or culture of the company, so that this number will improve. So if I found out the percentage of against each number, so let's say 1 2 3 4, so what I will do is I will pick this number. So let's say is equal to this divide by this, right? And then I will apply the same formula. I just need to, again, I just need to, okay, so this is done. Then this divide by this. This divide by this, then this amount divided by this. So you can see that almost 60%, 61% employees are nearly satisfied with the culture of the company. But there are 39% employees within the organization, they are not satisfied with the culture of the company. And this number is huge. Like 39% employees are not really satisfied with the culture of the company. So as an HR person or as an HR manager, you really need to work on the culture of the company by applying different or by executing different OD activities, by executing different engagement activities, or by improving the culture of the company, so that the number of 13, the percentage of 39% will go down to the maximum level. Otherwise this employee will not stay with the organization for a very longer period of time, right? So this is really important to understand, and to understand from the people perspective that what they are thinking, and what they are thinking you can easily visualize this in the form of numbers, so that you can easily take action or execute your action to improve this percentage. Okay, so the next part is, obviously this part is done. Now the next part what we will do is, so we have checked the employee satisfaction ratio, employee environment satisfaction ratio, and now we need to identify the department wise headcount. Like department wise headcount kya hai, kis department mein kitne log hain. So what we can do is, so let me uncheck all of these. So I will uncheck the age part, then I will uncheck the, oh my apologies, the Excel, let me, yeah, so I will uncheck the age part, and then I will uncheck the environment satisfaction part, right? Okay, so now मुझे किस चीज को मुझे मालूम करना है, डिपार्टमेंट वाइज डेटा, राइट? और डिपार्टमेंट वाइज डेटा के लिए okay, department wise data के लिए what I will do is, so I will go to the departments, right? And now I need to find out the head count of all of these three departments. Like HR में कितने लोग हैं,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने लोग हैं, सेल्स में कितने लोग हैं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द लेट्स से कोई भी मैं एक वेरिएबल पिक कर लूँगा. लेट्स से एज मैंने पिक कर लिया एंड एज को मैंने काउंट करवा दिया ताकि आई विल इजीली फाइंड आउट कि मेरे पास total number of head count कितना है department wise. So the total head count is obviously 63%, 63 people are in HR, 961 in research and development, and 446 employees are in sales. So अगर मुझे इसका chart बनाना है, so what I will do is, so I will go to this number and again I will go to the pivot chart on in the analyze tab. और एनालाइज टैब में आपको ये आराम से मिल जाएगा और यहाँ पर आप आराम से पाई चार्ट बना सकते हैं. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट पाई चार्ट, सो यू कैन सी दैट, और उसको आप फिर कन्वर्ट कर सकते हैं इस पाई चार्ट को इनटू द परसेंटेजेस ताकि आपके पास आराम से जो है वो यू कैन सी दैट, राइट. सो जो टोटल पॉपुलेशन आपकी है उस पॉपुलेशन में 66% पीपल बिलोंग्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 30% people belongs to obviously sales team, and 4% population belongs to your like HR team, right. So उसको आप आराम से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल जो पॉपुलेशन है आपकी वो 1470 की है, जिसमें से आपके पास जो रेशो है हेड काउंट का वो इस तरीके से आ रहा है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, हमने अभी इस चीज़ को डिस्कस कर लिया कि एट्रिशन कैसे मालूम करना है, एट्रिशन वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं. उसके बाद जो हमने पार्ट डिस्कस किया वो एट्रिशन के बाद जो था वो जेंडर डाइवर्सिटी का था, मेल फीमेल का रेशो क्या है, मेल फीमेल में रेशो के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट हमने कवर किया वो कवर किया कि आपके पास जो है आपके पास डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट क्या है. डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट का मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज हमारे पास एवरेज एज ग्रुप क्या है. अगर मैं आपसे फाइंड आउट करवाऊँ कि एवरेज एज ग्रुप क्या है, सो नाउ अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा to uncheck all of these ताकि हम easily find out कर सकें average age group. Okay, so now this is done. Now what I will do is I will basically and I will okay. So we have an age group from 18 till 60, right. So now what I need to find out is I will basically apply the department, let's say, और department को मैं move कर जाऊंगा into. So now you can see that I have a data for different age group. So अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो 18 साल की वर्क फोर्स है वो टोटल 8 हैं आउट ऑफ 1470. सो अगर मुझे मैक्सिमम अपने लेवल को देखना हो कि मैक्सिमम एज ग्रुप कौन सा है, सो मैक्सिमम एज ग्रुप इज लेट्स से 78 people of the age group of 35 years, right. 77 is 34 years, and then 36. So मेरे पास जो मोस्टली ऑडियंस है दैट इज फ्रॉम 31 से लेकर 40 तक का एज ग्रुप जो है इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है. यू कैन इजीली फाइंड आउट कि नंबर्स आपके पास क्या है. तो आपके पास पता चल रहा है कि आपके पास जो मैक्सिमम वर्क फोर्स है वो बिटवीन 31 और 30 से लेकर 29 से लेकर 40 तक की है, राइट, आउट ऑफ योर डिफरेंट एज ग्रुप्स. सो इस तरीके से आप आराम से एज ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एज ग्रुप आराम से निकलवा सकते हैं, राइट. ओके, देन नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आई नीड टू फाइंड आउट कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, हेड काउंट है, उसमें से कितने लोग हैं जिनकी ट्रैवल जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंट रहता है और कितने ऐसे लोग हैं जिनका जो है बेसिकली ट्रैवल बहुत ही रेयरली होता है, बहुत कम होता है, और जो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करते. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अनचेक ऑल ऑफ दीज, राइट. सो लेट्स से मैंने डिपार्टमेंट को यहाँ से रिमूव किया एंड मैंने एज को यहाँ से रिमूव किया, एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल बेसिकली गो टू द ट्रैवल पार्ट जहाँ पे ट्रैवल मेंशन है ताकि मुझे पता चल जाए कि ट्रैवल में मेरे कितने लोगों के क्या नंबर है. सो बिजनेस ट्रैवल लेट्स से, ठीक है. सो 3 तरह के आगे, नॉट ट्रैवल, नन ट्रैवल, ट्रैवल फ्रीक्वेंटली एंड ट्रैवल रेयरली. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पिक एनी ऑफ द वेरिएबल दैट इज द एज और मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा इनटू काउंट. सो यू कैन सी दैट, सो मेरे पास जो निकल के आया है परसेंटेज वो निकल के आया है कि आउट ऑफ 1470 एम्प्लॉइज 150 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो जिनका ट्रैवल नहीं होता, उनकी जॉब ऐसी है कि उसमें ट्रैवल रिक्वायर्ड नहीं है.
और 277 एम्प्लॉइज मेरे पास ऐसे हैं आउट ऑफ दिस 1470 का जो नंबर है, इसमें जिनको ट्रैवल बड़ा फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होता है, वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। देन 1043 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि जिनकी ट्रैवलिंग बड़ी रेयरली होती है, कभी ज़रूरत जब पड़ती है तो वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, अदरवाइज दे डोंट नीड टू ट्रैवल टू different places or different location for the business perspective, right? So that's how you can easily calculate, or you can easily find out the numbers by using pivot table or pivot chart, right? Then the next part is मुझे ये चीज मालूम करनी है कि जो हमारे पास employees काम कर रहे हैं उनके marital status क्या है, उसकी percentage क्या है. So what I will do is I will again uncheck the age part and uncheck the travel part, and what I will do is I will go to the marital status option field and I will check this. So let's say marital status is where, okay, marital status, right? So we have three types of categories, right? So now मुझे ये चीज find out करनी है कि मेरे पास marital status में क्या percentages हैं. So what I will do is I will basically pick a variable like age and उसको मैं basically count में move कर दूंगा ताकि मेरे पास numbers निकल कर आ जाएं कि this is the age. Okay, so out of 1470 people, 470 workforce are single people, 673 are married, and obviously 327 are divorced people. The total head count, and now I need to make a pie chart for this. So what I will do is I will basically go to the analyze option and I will pick a chart from there. Let's say हम pie chart की हम बात कर लेते हैं. So I pick a pie chart from there, right? और यहाँ पर मैं let's say अगर मुझे कोई percentages वगैरह add करनी है तो I can easily pick up percentage from the design option. So you can see that out of 100% population, 46% population are single. Sorry, 46% population are married, 32% population are single, and 22% population are divorced, right? This is how you can easily find out the marital status ratio of different employee of your workforce, right? Then the next part is, okay, this part is done. Now so we have the sample data. We can already work on the departments. Okay, now the EU race, right? Employee race के हवाले से हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के कौन कौन से लोग हैं. सो एथनिसिटी के हवाले से ओके. सो लेट मी अनचेक ऑल ऑफ दीज ताकि हमारे पास एक पिक्चर आ जाए. सो आई विल अनचेक द एज ग्रुप and I will uncheck the marital status, right? So now what I will do is I will basically pick the ethnicity of the employees. You can see that I have 7 different types of ethnicities. It involves American Indian, Asian, Black or African American, Hispanic, Latino, Native, 2 or more races, or white, right? So now I need to break up this data to all of these races, right? So again, I will pick a variable, any variable. You can say that I will pick the age part, right? और उसको obviously मैं convert कर दूंगा into a value field setting में जाकर count में. So you can see that the most audience, the number of, or the total head count of 1470, 853 are white people out of 1470, and the lesser audience are native Hawaiian or other Pacific Islander. The number is 11. Again, American Indian का जो number है वो 26 है, 2 or more races का 26 है. Asians are 80, Black or African Asians are 194, Hispanic or Latino are 278, but the white number is outlier in this headcount chart, and you can see that the total headcount chart is 853, and obviously which is almost 60-70% of the total population.
So it is really important to know all of these data, because फिर हम उसी की basis पर अपनी hiring और अपने company culture पे काम कर रहे होते हैं. And if we don't know this data, तो how can we work on the culture and how can we work on the headcount of our company, right? So the next part is, apart from that, okay, so we have already worked on the termination reason, termination, and business travel, obviously home location, department. Okay, educational field is again the most important part. Now मुझे ये चीज मालूम करनी है कि मेरे पास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी fields क्या क्या हैं, right? So what I will do is, again I will uncheck all of these data, right? Now I will pick the educational field. You can see that. So there are 6 different fields of worker are working in our organization, जिसमें HR के लोग हैं, life sciences के लोग हैं, marketing के लोग हैं, medical के लोग हैं, others कुछ fields होंगी, and then technical degrees है उनके पास. So now मुझे इसका breakup मालूम करना है कि HR से लोग कितने हैं जिन्होंने HR की degrees ली हुई हैं, ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने life sciences की degrees ली हुई हैं, ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने medical की degrees ली हुई हैं, other and then technical degree, right? So what I will do is, I will basically go to the, again कोई एक variable मैं यहाँ से pick कर लूँगा, let's say age part, and then I will basically convert it into the count part, so you can easily see that. So the audience of the most audience is from the life sciences field, and the number is 606 out of 1470, which is almost the 50% of total population. And then we have the marketing people, then we have medical people of around 464, other people are 82, technical degrees are 132, and then human resources are 27 numbers, right? So this is how you can easily calculate, or you can easily find out that, okay, so we have these ratios and we need to work on these ratios as well, right? Okay, तो आप इस तरीके से easily find out कर सकते हैं. Then the next part is, apart from education, is obviously the next part is the job role, कि उनके job roles क्या हैं, किस job role पे कितने लोग काम कर रहे हैं, how many positions do we have within the organization. So this data will easily will help you to identify the total number of positions that we talked about earlier in this session, कि किस तरीके से आप जो है वो कितनी positions आपके पास हैं, कितनी position vacant हैं, वो चीज़ आप easily find out कर सकते हैं. तो what I will do is, I will go to again the same sheet, and obviously उसमें फिर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले uncheck करूँगा इसको again सारे data को, and okay, so uncheck the educational field. Now what I will do is, so I will go to the job role. Okay, job role, and so you can see, so there are total 9 positions within the company. However, the headcount is 1470, but the total position in the company is are 9. Healthcare representative, human resources, laboratory technician, manager, manufacturing director, research scientist, sales executive, and sales rep. Right? So now मुझे ये चीज find out करनी है कि किस position पे कितने लोग हैं. तो लेट्स से मैंने किसी एक वेरिएबल को पिक किया अगेन एज को, एंड देन आई विल पुट दिस एज अ काउंट, right? So you can see that this data, so 131 are HR healthcare representative, then we have 52 HR people, 259 laboratory technician, 102 managers, 145 manufacturing director, 80 research director, 292 are research scientists, 326 are sales executive, and 83 are sales rep. So this is the number for obviously for all the positions that we have right now, and this is the breakup of 1470 according to position wise. So now I know that मेरे पास जो total positions हैं वो 9 positions हैं, और इन 9 positions पे जो total number of hiring है वो 1470 की है, right? So positions का होना पता होना भी बहुत जरूरी है कि total number of positions कितनी है, ताकि आप उसी चीज पे काम कर सकें. Then the next part is obviously years at company. ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो सबसे पुराने हैं, कितने लोग नए हैं, तो हमें वो चीज फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, आई विल अनचेक दिस डेटा. राइट नाउ आई विल गो टू द ईयर्स एट कंपनी. अगेन मैं इसको पहले काउंट में कन्वर्ट करूंगा. यस,
So from year 0 to, you can see that from year 0 to from year 40, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको 40 साल हो गए हैं, आई एम श्योर. सो ये डेटा वहाँ पे यूज होता है जहाँ पर आप बेसिकली बात कर रहे होते हैं सर्विस अवार्ड्स की. कुछ कंपनीज में स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान सर्विस अवार्ड्स बेसिकली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एवरी ईयर एंड टू बेसिकली रिकग्नाइज द एम्प्लॉय फॉर द स्टे विद इन द कंपनी. जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, so वहाँ पर every year we basically plan the service awards for 5 years, service award for 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years and 35 years. And I'm not sure, I think 40 years का भी सर्विस अवार्ड हुआ था जिसमें हमारे कुछ एम्प्लॉयज ऐसे थे जिनको 40 साल हो गए थे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए. दे आर द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉयज टू द कंपनी. ऑब्वियसली ये डेटा वहाँ पे काम आता है जहाँ पर आपने सर्विस डेटा अलाइन करने हो, ऑर्गेनाइज करनी हो, सर्विस अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करने हो, एंड यू नीड टू फाइंड आउट ऑल दोस डेटा ताकि आप उसकी बेसिस पर वर्किंग कर सकें, राइट. तो लेट्स से मेरे पास मैंने सबसे पहले एयर्स को आइडेंटिफाई करवा लिया है. नाउ व्हाट आई विल डू इज I will basically pick this to, you can see, convert it into the count part. Right, so you can see that, so there is one employee whose working experience or who's with the company for more than 40 years, then 37, 36, 34 years within the company. There are 5 employees who spent 33 years with the company, then 32 3 employees who spent 32 years within the company. So you can see that, but the mostly audience is from the top side, right? You can see that. So the almost 1180 audience, if I divide 1180 divide by 1470, तो 80% ऑडियंस जो आपकी है आपकी कंपनी में वो वाली है जिसको तकरीबन 10 साल हुए हैं टोटल काम करते हुए. बाकी जो आपकी 20% ऑडियंस है, दे आर बेसिकली ओल्डर फ्रॉम आई थिंक more than 11 years, more than 10 years, जिनको 10 साल से ज़्यादा काम करते हुए हो गए. तो वो ऑडियंस जो है आपके पास 20% की है. बाकी जो ऑडियंस आपके पास वो मोस्टली जो है आपके पास 40% की है, राइट. So these are the different HR matrices that we talked about. एंड इसके अलावा बहुत डेटा है इसमें. आप जिस तरीके से अपने डेटा को कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रोल वाइज, अकॉर्डिंग टू सेटिस्फेक्शन वाइज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल फील्ड, एजुकेशन का क्या लेवल है, उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम होम क्या है, डिपार्टमेंट्स किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेली रेट किसका टॉप पर है किसका कम है. So this is all the data you have, and you can just play around with this data to identify and to pick up the outcome that you really want, right? So let's say you have number of offers, job posted, hire. Basically you can easily find out. So the time to fill offer, let's say time to hire, you can see that time to hire number यहाँ पर मौजूद है, 13 days to hire this position. So if I need to find out the average time to hire, so what I will do is I will go at the bottom and I will just apply the average formula. So let's say average of this number, of this column in fact. So you can see that the average time to fill for each position in this company is 16.78 days. So मुझे इन चीज़ का अंदाजा है कि ओके, सो कुछ पोजीशन 16 से ऊपर वाली भी होंगी, कुछ पोजीशन ऐसी होंगी जो 6 दिन या 7 दिन में फिल कर गई होंगी. कुछ जैसे लेट्स सी, यू कैन सी दिस पोजीशन, दिस द टाइम टू हायर फॉर दिस पोजीशन इज 2 days. लाइक 11th को ये पोजीशन फिल वेकेंट हुई है, 13th को ये पोजीशन फिल हो गई है. So obviously but the total average of time to fill is 16.78 days, right? इसी तरीके से now you can easily track out the performance of the HR team कि वो किस तरीके से जो है वर्किंग कर रहे हैं. So just like this you can have the data जिसमें आप distance from home, average distance from home मुझे निकालना है तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ employees. So what I will do is just apply the formula for average. So let's say so you can see that, so the average distance of employee is 9 kilometer. किसी का जो है वो obviously ज़्यादा होगा, किसी का distance कम होगा, but the average distance of the employee from the location is 9 kilometer. But if I need to find out the minimum, so obviously I will pick the minimum for formula, and then so the minimum distance is 1 kilometer and the maximum distance is, let's say,
29 किलोमीटर. So there are some employees जिनका जो distance है that is 29 kilometer from their residence, right? So you can easily find out this thing as well. इसी तरीके से obviously employee satisfaction, environment satisfaction we already talked about, gender, hourly rate, job involvement percentage, job level, job role. So there are so many there are so many data, so many columns that you can play around with this data, and you can easily find out with all of these things. Like say air at company हमने already मालूम कर लिया है. वर्क लाइफ बैलेंस हमें मालूम करना है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉय क्या सोचते हैं. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द शीट अगेन एंड देन आई विल अनक्लिक ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हमने हमने पहले यूज की हुई है. एंड लेट्स से हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं. सो मैं गया वर्क लाइफ बैलेंस पे एंड वर्क लाइफ बैलेंस को ऑब्वियसली मैंने काउंट पे लगा, पहले इसको मैंने मूव कर दिया टुवर्ड्स द रो साइड. You can see that 1 2 3 4. 4 means they basically like the company as far as the work life balance is concerned, and then I will go to age part and then I will connect this to the count. So you can see that 40, 80 people thinks that they don't like the work life balance of this company. 344 thinks that they on an average पर है वो 893 people समझते हैं कि भाई जो work life balance है वो बेहतर है, और 153 feels like this is the best organization as far as the work life balance is concerned, right? So इसी तरीके से और बहुत सारे इसमें different variables हैं. You can play around with this variables and you can find out the HR matrices that you are looking for. So यहाँ पर हम अपने सेशन को मैं अपने सेशन को जो है वो क्लोज करता हूँ. And so let me summarize the content with you जो हमने cover किया है. And what I will do is I will ask the team to share the presentation and the Excel sample file with all of you ताकि आपके पास कंटेंट भी आ जाए और कंटेंट के साथ जो है आपके पास सैम्पल फाइल्स भी आ जाएं जिसकी बेसिस पे यू कैन प्ले अराउंड विद दिस डेटा, यू कैन प्ले अराउंड विद ऑल ऑफ दीज फार्मूलाज ताकि आप इसके साथ आराम से कर सकते हैं. सेकेंडली अबाउट रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी. जिन लोगों की ईमेल एड्रेसेस हैं आई एम श्योर जो टीम है वो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देगी विद ऑल द रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट, ताकि बाद में अगर कभी आपने सेशन को रिव्यू करना हो या बाद में कभी दोबारा देखना हो तो यू कैन ईजिली ट्रैक दो सेशन एज वेल. Right, so let me summarize the topic for all of you. So हमने start किया था HR analytics से जिसमें हमने discuss किया कि what is HR analytics. Then we talked about HR matrices जिसमें हमने ये देखा कि जितने भी आपके key performance indicator होते हैं HR के, we call it HR matrices. And then we connect that HR matrices to all the to the business data. And जब हम HR matrices को connect करते हैं business data के साथ तो वो बन जाता है HR analytics. हाइपोथेसिस हम बोलते हैं उन सारी assumptions को जो कि आप दे रहे होते हैं on the basis of different results. You don't have the data, but आपने एक statement दे दी about different outcome, तो obviously वो hypothesis कहलाता है. Onboarding का मतलब होता है कि आपके पास जो employee join करता है वहाँ से उसको आप different चीज़ों पे orient कर रहे होते हैं, and जब तक वो आपकी कंपनी में settle in होता है तो वो आपका onboarding process कहलाता है. Then return on investment हमने cover किया. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आप expense basically bear कर रहे हैं ऑन डिफरेंट कंपनी ट्रेनिंग्स और ये सारी चीजें, तो उस पर आपने एक रिटर्न आपको करना होता है, तो दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. फिर हमने कवर किया कि हम क्यों HR एनालिटिक्स में जरूरत पड़ती है. देन वी टॉक्ड अबाउट इंप्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, वेलबींग, जेंडर डाइवर्सिटी. फिर हमने बात की एम्स ऑफ HR एनालिटिक्स जिसमें हमने डिस्कस किया कनेक्ट, इनेबल, मेजर, कि सबसे पहले आप डेटा को कनेक्ट करते हैं, फिर उसको आप ऑब्वियसली फिर आप उसको मेजर करते हैं और फिर आप एनेबल होते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए. उसके बाद भी डिस्कस द इम्पोर्टेंट फैक्टर और इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ HR एनालिटिक्स डेटा जिसमें हमने कवर किया था प्लान, डिफाइन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, डेटा ऑडिट, डिज़ाइन स्ट्रेटजी, डिज़ाइन प्रोसेस, करेक्शन डेटा, और उसके बाद हमने कवर किया एनालाइजेशन, रिपोर्ट और इवैल्यूएशन. सो हमने वो पूरा प्रोसेस देखा. उसके बाद हमने डिफरेंट HR मैट्रिसेस डिस्कस किए रिक्रूटमेंट के हवाले से, वर्कफोर्स के हवाले से, कॉम्पनसेशन के हवाले से, इंगेजमेंट के हवाले से, सर्वे के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, एंड उसकी कुछ हमने एग्जांपल डिस्कस की बाय यूजिंग पिवट टेबल, बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सेल टूल, कि किस तरीके से हम उस डेटा के साथ प्ले अराउंड करके चीज़ें फाइंड आउट करके मैनेजमेंट की हेल्प कर सकते हैं, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग को ले सकते हैं ताकि हम आगे बेहतर ऑप्शंस एग्जीक्यूट कर सकें फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव.
So thank you very much to all of you for attending this webinar. Our team will be sharing the presentation, sample data and the recording with all of you ताकि आपको अगर बाद में कोई support चाहिए हो, बाद में कोई help चाहिए हो, so you can contact me on my number. Obviously, I will help you out in that as well. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.